within a given environment, if you have to decide that what kind of an industry you should enter in, whether, for example, if you have to decide where you should, locate your textile mill, or where should you invest in a sugar industry, in a sugar factory, what are the factors that you will take into consideration? What are the macroeconomic areas? What are the macroeconomic inputs that you will be requiring? To help you or to facilitate you in making such decisions about a certain location, Mr. Michael Porter gave us a model. This model is known as Porter's diamond. Please remember, it has got nothing to do with diamonds, but basically it comprises of 4 factors. Michael Porter identified 4 factors that you have to take into consideration while deciding about the location of a certain business or a certain industry. Porter said that if you are deciding, or if you have to see whether a location is suitable for a certain industry or not, you have to take a look at the factor conditions first. Factor conditions are all those elements which basically make a particular country or make a particular region suitable for a certain industry. For example, if you are setting up a sugar factory, can you really do that in a place like Balochistan, where agriculture is not really possible because of the land conditions? So if you set up a sugar factory in Balochistan and there is no raw material available, obviously you won't be able to operate. So the availability of raw material at various locations, क्या वहाँ पे जो industry आप चलाने जा रहे हैं उसका raw material, उससे related जो भी आपको inputs चाहिए, क्या वो आसानी से available है? अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि जी factor conditions are suitable. By the way, Michael Porter को ये idea आया कैसे to develop this Porter's diamond? He basically studied that there are various regions and countries in the world which are known for certain industries. For example, Germany is known for cars. Germany is known for certain other things as well, but their most popular thing is their automobiles. Similarly, South Africa is known for their diamonds. Cubans are known for their cigars. Pakistan is popular for its textile industry. So based on all this, he realized that there must be some favorable factors in these countries or in these regions which are making these industries flourish in these parts of the world. So what he did, he identified these 4 factors. The first factor, as I identified earlier, was the factor conditions. So if you look at Pakistan, you will find that we have very favorable factor conditions for textile. However, Pakistan will not be suitable if we try to develop this country as a tea growing country. Tea growing हमारे यहाँ possible ज़्यादा नहीं है because it requires a certain kind of atmosphere and certain kind of climate which is not available to us. So the factor conditions for becoming a tea player is not suitable in Pakistan. The other factors that Mr. Michael Porter identified included the demand conditions. Now what are demand conditions? यूँ समझिए कि अगर एक कंट्री में, अगर हम जर्मनी ही की बात करें और हम कहेंगे जी जर्मनी इज वेरी गुड इन मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, तो हम कहते हैं जी जर्मनी itself, within Germany, there is a serious demand for cars. So whichever company starts operating in that part of the world, जब वो cars बनानी शुरू करती है तो वहाँ पे एक अच्छी बड़ी डिमांड internally मौजूद है. Result क्या निकलता है? That they get a chance to improve before going for exports. Similarly, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो there are some 16, 17, 18 करोड़ लोग जो सारे के सारे कपड़े पहनते हैं, जिनके सबके घरों में चादरें भी होती हैं, पर्दे भी होते हैं और कपड़े का बहुत ठीक ठाक इस्तेमाल होता है. सो इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज में जिनमें डिमांड जिस चीज़ की ज़्यादा होती है, जो कंपनीज वहाँ वो चीज़ बनाती हैं उनको ऑटोमेटिकली अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने का मौका मिल जाता है बिफोर दे गो फॉर एक्सपोर्ट्स. अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर उनके पास एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है फॉर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स. दे आर बिग इन साइज. सो नतीजा क्या निकला कि उनकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को मौका मिला नई प्रोडक्ट्स बनाने का और वहीं पे एक्सपेरिमेंट करने का.
अल्टीमेटली जब उन्होंने उन चीजों को रिफाइन कर लिया तो नाउ दे आर इन अ पोजीशन टू एक्सपोर्ट। सो इसी तरह से जो डिमांड कंडीशंस हैं वो किसी कंट्री को या किसी पर्टिकुलर रीजन को एक पर्टिकुलर फैक्ट्री या इंडस्ट्री के लिए सूटेबल बना सकती हैं। द थर्ड फैक्टर इन दिस रिगार्ड दैट माइकल पोर्टर आइडेंटिफाइड वर द सपोर्ट इंडस्ट्रीज। यूं समझिए, आप एक जगह पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं किसी भी चीज की, आप एक जगह पे बैंक खोलना चाहते हैं, अगर वहां पे टेलीफोन लाइंस अवेलेबल ना हो, अगर वहां पे बिजली के कनेक्शंस अवेलेबल ना हो, अगर वहां पे सड़कें बनी हुई ना हो, तो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू ऑपरेट? You can't. So there is a requirement for some support industries as well. For example, wherever you try to run an industry, you need to have logistics available. आपको वहां पे पेट्रोल पंप्स भी चाहिए, भले आपका बिजनेस पेट्रोल नहीं है, but you need to have petrol in order to run. इसी तरह से वहां पे आपको पावर सप्लाई चाहिए, वहां पे आपको फूड सप्लाई चाहिए, वहां पे आपको और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज चाहिए होती हैं जो उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए जरूरी हैं. सो वेदर certain supplies or certain support industries are available in a certain region or not, that makes a big difference. यूं समझिए कि अगर हम कहें कि जनाब थरपारकर के किसी कोने में बहुत अच्छे हमारे पास कुछ मिनरल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास वहां पे कोल अवेलेबल है. What is the problem in extracting that coal? The major issue is non-availability of infrastructure. आपके पास वहां जाने की सड़क पूरी नहीं है, अभी वहां बिजली के कनेक्शंस नहीं है, वहां सेल फोन्स का सर्विस नहीं है, वहां पे टेलीफोन के कनेक्शंस अवेलेबल नहीं है. सो whoever will go there will get lost. So therefore, इससे पहले कि हम उस जगह को से एक्सप्लोरेशन शुरू करें, हमें पहले वहां पे सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज येट अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट. The fourth element that he identified was the rivalry and the firm structure within the given industry. यूं समझिए, वो जैसे इकबाल ने किसी जमाने में कहा था, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए ही. क्या मतलब है इस बात का? बेसिकली this means that the greater the competition in an industry in a particular region, the more are the chances of improvement in the industry. अगर हम फिर पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स की एग्जांपल लें तो हमारे पास ठीक ठाक कंपटीशन है. There are a variety of players making these lawns and these towels and these home related different type of products. जब आप के पास कंपटीशन होता है तो आपको उस कंपटीशन से लड़ने के लिए अपने आप को इंप्रूव भी करना पड़ता है, और ये इंप्रूवमेंट ग्रेजुअली आपको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाती है. एंड दिस इज व्हाट रियली मैटर्स इन द इंटरनेशनल सिनेरियो. अगर हम वापस चलें जर्मनी की एग्जांपल पे और हम देखें कि वहां की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या कंपटीशन है, फियर्स कंपटीशन. देयर इज कंपटीशन बिटवीन BMW and Mercedes, well known, but we cannot forget Volkswagen. Volkswagen has its own series of vehicles. So what is happening there? They have serious competition in-house, which makes them improve continuously, and ultimately it makes them compatible, rather ahead of the rest of the world when it comes to automobile market. So with the help of Porter's Diamond, हमने बेसिकली ये देखा कि एक पर्टिकुलर मैक्रो एनवायरनमेंट में रहते हुए एक कंट्री, एक रीजन, एक सूबे या एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट पे आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि हमें कोई इंडस्ट्री सूट करती है या नहीं करती. हमने देखे 4 फैक्टर्स: फैक्टर कंडीशंस, डिमांड कंडीशंस, सपोर्ट एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, एंड द राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग फर्म्स.